गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। दिस इज एडवोकेट वीर कंकारिया। आप लोग आज मुझे इस चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे, बट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मिस्टर हंस जी सिंस क्वाइट अ वाइल नाउ, एंड समथिंग अबाउट मी, आई हैव been practicing at the Honorable Supreme Court, High Court, and various other courts in this country, primarily Honorable Supreme Court and the High Court, and I've been handling matters specifically pertaining to family issues, domestic issues, which is why I've been associated with Mr. Hans Chanda and Hans Legal Helpline, and he handles the matters at the executive end, and I handle them at the legal end. And this channel was also started by him with the motive of protecting and safeguarding rights of men specifically, which nobody really talks about because of the false allegations, false cases which have been put against them. Or today we are going to basically talk about the topic of section 498A of the IPC. Now we all know what section 498A is, how widely it is misused. इस चीज़ का कितना misuse होता है, this is evident from the fact that in almost 93% of cases there is charge sheet which is filed, whereas the conviction rate is only around 15%. इसका मतलब ये कि 93% सारे मामलों में चार्ज शीट फाइल हो जाती है, बट देन द कन्विक्शन रेट इज ओनली 15%. सिर्फ 15% लोग आर एक्चुअली कन्विक्टेड, द हस्बैंड्स एंड द फैमिलीज हु आर द टारगेट्स ऑफ दिस. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इशू, हाउ डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स from basically the police station level. The lady goes and complains to the police station, a complaint is made, then a charge sheet is filed और मामला कोर्ट में जाता है. इस दौरान what can the husband's family do? Before the FIR is registered, अगर आपको ये apprehension हो रहा है, अगर आपको ये डर है कि आपकी अरेस्ट हो सकती है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कीजिए कोर्ट में. एंटीसिपेटरी बेल इज बेसिकली on the mere apprehension or the mere fear that a false case is going to be registered against you. You can go to the court and ask for bail, and easily a court can grant bail, especially to the relatives, to the family members of the husband in such cases, because in most of the cases even the court is of the view that they are false and they are with a malicious intent to just malign the reputation of the family members in the society or to harass the husband for illegal and unlawful demands. Moving on, then how does the whole process take place? Basically the lady goes to the police station, she files a complaint, FIR हो जाती है. इसके बाद मामला कोर्ट में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं? There are two ways. Number one is that you can file a discharge application before the court. Now before filing a discharge we need to be 100% sure, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि there are solid grounds which prima facie prove that we are not involved in the matter. Otherwise discharge इतने आसानी से नहीं मिलता. Alternatively, there is also a provision under the CRPC, which I'm sure most of you must have heard, section 482 of CRPC, for quashing the entire proceedings. Now, in quashing proceedings, the courts have generally taken a view that prima facie, if there are solid grounds that the evidence is false, the story is concocted, the family members, they get, as against them, the FIR is quashed, the complaint is quashed, whereas the husband is still, he has to face the trial. So the chances of getting success in quashing are fairly based on the facts and circumstances of the case. Prima facie, they have to establish that the entire evidence is false. Now coming to evidence, a very interesting question is that अगर आपको पता है कि झूठे सबूत दिए जा रहे हैं, तो how do you tackle that? First of all, if you discover that the evidence is false, you should try and collect the true evidence, पहली बात, so that you can counter it before the court. Also, alternatively, let me give you an example. If a jewelry bill is given by the wife and you know that it is false, you can actually file a sales tax evasion petition with the Trade and Tax Department against the jeweler, which will make the jeweler aware, and even he will be involved in the matter. And this is how you can dig up things. And ये तो बहुत छोटा सा example हो गया. This is the gravity of research and analysis that has to be done in such matters. And coming to the strategy that is followed in these matters, I am of the view that attack is the best defense, because if you try and persist with the matter, it may take years to prove that you are innocent and not guilty. And in the meanwhile, if you are not given bail, so you'll have to suffer, you have to be behind bars, because as we all know that this is a cognizable offense. Cognizable offense का मतलब ये कि पुलिस बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के
अरेस्ट कर सकती है आपको जस्ट ऑन प्राइमा फेसी ग्राउंड्स, इवन दो देयर हैव बीन गाइडलाइंस मैंडेट सेट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मल्टीपल केसेस दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन 498A केसेस, बिकॉज दे आर बीन फाइल्ड टू harass द फैमिली. बट स्टिल देर आर many instances wherein the police does arrest and the family has to suffer. Now सवाल ये उठता है फिर दूसरा कि आप कौन से काउंटर केसेस कर सकते हैं. जस्ट शॉर्ट समरी अगर आपको मैं दूँ एक, सो समथिंग लाइक defamation is a very solid ground which can be taken eventually later on if it is proved that the entire proceeding was just to malign the family's reputation in society. Then 120B, criminal conspiracy, giving false evidence, fabricating false evidence. These are basically multiple offenses in the IPC which can be, eventually used to prove your case that you are right, and in essence all of this was just with the intention to harass you and your family members. Then now एक और सवाल ये उठेगा कि अगर आपको पता चल रहा है कि आपके खिलाफ फॉल्स केसेस होने जा रही है, सो डू यू अप्रोच द पुलिस स्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, या आप वेट करते हैं कि पुलिस के पास से कुछ आएगा. तो इसमें एडवाइजेबल ये होता है कि आप पुलिस को खुद अप्रोच कीजिए. यू गिव देम अ कंप्लेंट टू द SP और द कमिश्नर इंचार्ज, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू शुड नोट दैट आपको इस कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट कॉपी अपने साथ रखना चाहिए. एंड ऑल्सो दैट इफ द एक्नॉलेजमेंट या रिसीव आपको नहीं मिल रहा है, सो देन यू सेंड इट बाय पोस्ट, RPD से भेजिए और एक्नॉलेजमेंट अपने पास रखिए. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. दी स्मॉल थिंग्स एक्चुअली इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें बहुत मायने रखती है व्हेन यू आर बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ. Then again coming to 482, under 482 if you go, then there are two types of writs which can be issued in these cases. One is a writ of prohibition which can be issued to the subordinate court to quash the entire proceedings. Another writ is the writ of mandamus against the police officers. So if you feel that कोई police officer है जो ज़बरदस्ती false evidences ले रहा है और ज़बरदस्ती झूठी केस बना रहा है आपके अगेंस्ट, एंड इफ यू हैव सॉलिड ग्राउंड्स टू प्रूव दैट ही इज पर्सनली इन्वॉल्व, इवन ही कैन बी समन्ड बिफोर द कोर्ट वायर आर्टिकल 226 बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो ये रहे कुछ लीगल प्रोविजंस इस चीज़ के लिए. ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट दिस इज दैट अनदर वे इट कैन बी अप्रोच्ड इज दैट इफ द वाइफ इज नॉट रेडी टू कोहैबिट विद द हस्बैंड, a petition under section 9 of the restitution of conjugal rights, section 9 for restitution of conjugal rights can be filed, wherein if you win there, then it can have a positive impact on your 490-day case, where it can be shown that without solid grounds the wife has left. So basically the only thing which has to be remembered is that 498A is such a case which cannot be fought in a single court or a single forum. You have to handle it at all levels, at all forums. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप इनकम टैक्स में भी आपको जाना पड़ सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं. वेरियस केसेस इन द फैमिली कोर्ट्स कैन बी पुट अक्रॉस, एंड अकॉर्डिंगली देन द ट्रूथ हैज़ टू बी डग आउट, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट